that is the Grand Cherokee. Called actually the Guardiola. Seriously, कैसा हुआ है? this is spectacular. Seriously, everyone should buy this. Literally, not everyone can afford it, but still, like, this is something which is never expected from like any other car maker which I have. It is still now. True. Wow, see the screen. ये कहानी एक ऐसी SUV की है that defines adventure, capability and raw muscle. That one name that stands tall, the Grand Cherokee, the Jeep Grand Cherokee. आज हम लोग इस हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जहाँ पे I'll talk you through the evolution of the Grand Cherokee. Born in the early 90s, ये एक सिंबल रहा है rugged sophistication का for over 3 decades, 30 साल. And today, आज हम लोग एक क्विक जर्नी थ्रू हिस्ट्री लेंगे जहाँ पे इसका एवोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे when it became a modern luxury SUV that it is today and how it stands tall in India, right? The story begins in 1993 जब जीप ने पहला जनरेशन ऑफ ग्रैंड Cherokee the CZ इंट्रोड्यूस किया था ड्रामेटिक स्टाइल में. ड्राइविंग थ्रू अ ग्लास विंडो आप देखोगे ये डिट्रॉइट के ऑटो शो में, जो मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं सकता हूँ, बट इट वॉज द फर्स्ट SUV दैट वॉज लॉन्च्ड completely off-roader, combined with the DNA of the Cherokee and very premium design, unibody construction and features like a driver's airbag. तब रेयर था, राइट? तब ये लग्जरी SUV compete करता था फोर्ड और लैंड रोवर, रेंज रोवर के साथ. तभी ये इंट्रोड्यूस किया गया था. सेकेंड जनरेशन जब आया था वो इट वॉज इन दी 1999, प्रोबेबली 2000 साल में. एंड इट वॉज मोर रिफाइंड, स्मूथर राइड, न्यू 4-wheel ड्राइव सिस्टम के साथ. इसको क्वाड्रा ड्राइव बोलते थे और एक 4.7 लीटर V8 इंजन के साथ आती थी. जीप स्टार्टेड टू बैलेंस द कंफर्ट एंड कैपेबिलिटी, अपीलिंग टू बोथ अर्बन एंड एडवेंचर कस्टमर्स. वो एक एरा था जब ग्रैंड Cherokee काफ़ी सीरियस SUV बना करता था, नॉट जस्ट एन ऑफ रोडर, राइट? थर्ड जनरेशन 2005 में आया, which was called the WK, which took things forward. Independent suspensions, better off-road manners, and if you remember the introduction of the SRT8 version, oh my god, आप देखोगे उसको पागल हो जाओगे, right? It turned heads, and that was the only Jeep or the first Jeep which could do 0 to 100 in under 5 seconds. Can you believe it? It was so fast and nothing like a Jeep, right? फिर आया उसका फोर्थ जनरेशन 2011 में, which truly changed the perspective. It built on a platform which was shared with Mercedes. Sophistication के साथ, leather interiors, advanced tech, air suspensions, premium styling. It was this model that made its way strongly into India, blending luxury with the go anywhere attitude, जो basically जीप के कारी में होता है. अब इसकी बात करते हैं. That is the new era, जब पांचवा इनका जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन जब ग्लोबली लॉन्च हुआ था 2021 में. It was a massive leap in design and tech. A huge wheelbase, digital cockpit, premium materials, advanced 4x4 systems, right? It is one of the most refined Jeeps car that you'll ever see in Indian market. Grand Cherokee. I think अमेरिका में इसका 3-row version भी आता है, but India में it's only the 2-row version, right? If you look at the interior right now, it has 3 screens, one on the driver's side, one in the middle, and one for your passenger. आप बैठोगे इसमें, you'll just become a huge fan. And just look at the plush interiors, right? And the way that they have designed it, oh my god, it's great.
2025 में इसका जो 6th जनरेशन राइट वो आया था राइट, still continues its legacy and it's right now locally assembled model है which is powered by a 2-liter turbo petrol engine and with a 8-speed automatic. ये जो सिग्नेचर जीप का क्वाड्रा ट्रैक 4x4 सिस्टम है उसी के साथ आता है. You get a fully digital cockpit, ventilated seats, ADAS, whatnot. Global SUV है. It may be competing with all other big SUVs that you ever know in the market, right? With the likes of Land Rover, you can compete with this. Plus, it may not feel like an V8, but it represents what Jeep stands for, right? Adventure, capability, and the smoothness and the drive quality that it feels like. Amazing. Jeep का DNA अभी तक कंटिन्यू करता है इस गाड़ी में. पीछे का थाई सपोर्ट थोड़ा कम है लेकिन आई थिंक ग्रेट कंफर्ट. थाई सपोर्ट एक्चुअली कम है. द हेड स्पेस इज क्वाइट गुड एंड दे हैव विंडो शेड्स. ये वाला चेक इट आउट. Sorry, shit. Sorry, my bad. This is the limited. Boot space नहीं देख सकते. You do not have the key. But this is the. अच्छा. And thank you for watching Babaji Rocks.